Hi friends. So result season is almost over. What's next? मार्केट में अब क्या होने वाला है? कॉर्पोरेट रिजल्ट्स तो आ गए, बट जो इलेक्शन के रिजल्ट है वो तो बाकी है. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट विच मार्केट इज वेटिंग फॉर. जब तक वो रिजल्ट आते नहीं तब तक कॉर्पोरेट रिजल्ट्स मार्केट को हिलाने वाले नहीं है. सो व्हाट आई मीन इज unless till December first week, we think market will be in a trading zone with a slightly upward bias, high volatility. मतलब market ऊपर भी जाएगा, market नीचे भी आएगा. So that is what we think. Broadly, market looks like for next 2 to 3 weeks. But market में एक नया जावा आया है. So जावा का जलवा टेस्ट करते हैं. You know how stock prices of Mahindra and Mahindra will react and how it will impact Royal Enfield. So Royal Enfield 5 years ago when it launched a full-fledged Royal Enfield, वो टाइम पे आइशर का P रेशियो था only 15 or 16, and then slowly and steadily जब आ रही रॉयल एनफील्ड में ग्रोथ आई, so that was the time P multiple expansion हुआ and आइशर मोटर became a multi-bagger stock. So can same thing happen to Mahindra and Mahindra? Currently, Mahindra and Mahindra is available at 16 odd P multiple. Same thing will not happen because Mahindra has got a large bouquet of businesses. So अगर जावा ने सक्सेस मिला तो भी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ इतना नंबर्स पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, so that Mahindra and Mahindra can become somewhat like Eicher Motor in next 2 to 3 years. But instead of Java launched as a big event, we think this will impact directly Eicher Motor because अब Royal Enfield का first competitor, direct competitor market में आया है, and वैसे ही Eicher Motor की sales growth slow down हो रही थी, and now the Java with a better price point, मतलब Royal Enfield से काफी सस्ता है. So I think Royal Enfield will have a bigger problem. But is it a time to sell Royal Eicher Motor? We advised or we had analyzed Eicher Motor sometimes a year ago, wherein we had advised that because there is sales growth slowdown at around 28,000, we thought that now this is time to sell and book profits for Eicher Motor. But currently prices are really too down. Wait for a bounce back and Eicher Motor should slowly and steadily drift lower. So there is one more stock which is very important to analyze, and I think some of the key factors are very essential. So let me share. Page Industries का result this week आया था, and after the result stock prices have started to come down heavily. So let us analyze. You know, Page Industries is currently available at what, around 70 P multiple. पिछले 3 साल का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का था 30% प्रॉफिट एंड 30% सेल्स ग्रोथ. सो 30% कंपनी वाज ग्रोइंग एंड इसके लिए कंसिस्टेंसी थी, एंड देयरफॉर स्टॉक प्राइस हैड रियली मूव्ड अप एंड वाज ट्रेडेड एट अराउंड 75 पी मल्टीपल एंड हाई वाज एट अराउंड 80. अभी इस क्वार्टर में ग्रोथ वाज हाउ मच? ओनली 10%, एंड ग्रोथ कंपेयर्ड टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर देयर वाज अ डी ग्रोथ. So now market is worried whether the company will deliver growth, क्या momentum कम होगा, etc., and therefore Page Industries has started to come down after the result. So the point that I am making is, result आने के बाद when you analyze the result, even a layman can come to a conclusion that it is time to sell Page Industries. I will again repeat, 3-year, 5-year growth record was around 30%. इस बार रिजल्ट was only a 10% growth. Valuation was high at around 75-80 P multiple. So how can you justify such high valuation multiple? So that this is the reason why Page Industries has in fact corrected sharply, and we believe the long term trend है Page Industries का has turned downward and stock is below 200 moving average. So from trading point of view, you should sell at every rise. And investor शायद निकल जाना चाहिए because now the growth momentum has reduced a lot. एक और जेट
जेट हैड एन इंटरेस्टिंग मूव. एक्चुअली पिछले 2 या 3 महीने वीक में जेट हैज बिकम डबल. एंड लोग बोल रहे हैं कि शायद टाटा ले लेगी एंड वगैरह वगैरह, एंड देयरफॉर स्टॉक प्राइसेस शुड गो अप. फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रीएम्प्ट और प्रिडिक्ट कि अगर टाटा ले लेगी तो और भाव बढ़ेगा और एट व्हाट वैल्यूएशन. सो ट्रेडर शुड ऑलवेज रिएक्ट और पोस्टमार्टम एनालिसिस करना चाहिए, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू ट्रेड एंड मेक मनी विद सेफ्टी. So I'll give an example. So Yes Bank after the resignation of Ashok Chawla is one of the committee member or chairman of a committee who was searching CEO. When he resigned, after that resignation, you had enough opportunity to short Yes Bank, because you know that Yes Bank had a price run up, open interest was high. So Yes Bank was the only bank in private sector space whose open interest had increased by 20% from the previous past 2 months. So there was something that was cooking up, and there was a resignation. So although prices opened 1.5-2% gap down, but still you could make money by shorting and making around 10% odd. So these are very safe trading bets wherein you don't have to predict, you only have to react. तो ये ज्यादा फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके के ट्रेड्स काफी इजी है, लो रिस्क एंड हाई रिटर्न एंड हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी, रादर देन प्रिडिक्ट करना कि ये जेट एयरवेज डील की क्या होगा, टाटा लेंगे नहीं लेंगे, अगर नहीं लिया तो सो देन इमेजिन व्हाट विल हैपन टू द स्टॉक प्राइस, और अगर ले भी लिया देन ऑल्सो व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस आर अप, कंपनी इज हाईली इनटू डेट और कंपनी की कुछ तो वैल्यू है, इक्विटी वैल्यू 0 है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असाइन अ वैल्यू, एंड करेंटली द वैल्यूएशन इज हाई. सो moral of the story is, from a trading perspective, something like Yes Bank, people should react. I think taking a trade after reaction and doing a post-mortem analysis is far more easier rather than predicting. So from trading perspective, इन्वेस्टर के लिए करंटली मार्केट एज आई सेड एक ट्रेडिंग रेंज में इन्वेस्टरों को दूर रहना चाहिए अनलेस वी हैव क्लैरिटी, और एक दिसंबर तक ऐसा ही चलेगा मार्केट में. देन आफ्टर ड्यूरिंग दैट टाइम वी विल सी, यू नो, विल assess the political scenario, the strength of the parties वगैरह वगैरह. तब तक मार्केट किधर भी भागने वाला नहीं है. सो इन्वेस्टर्स आप अपना पैसा बचा के रखिए, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आप संभाल के रखिए, नया पैसा आप बैंक में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स वगैरह रख सकते हो. फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मार्केट डिफिकल्ट है, ऊपर के स्टॉप आउट भी आप लॉन्ग करेंगे तो स्टॉप आउट हिट हो जाएगा, शॉर्ट करेंगे तो भी स्टॉप हिट हो जाएंगे, तो डिफिकल्ट है. बट फिर भी हमने एक स्टॉक निकाला है डाबर. तो शायद अगर आपको ट्रेडिंग करने के लॉन्ग करने का अगर मूड बने तो डाबर इज अ गुड स्टॉक, काफी करेक्ट हो चुका है एंड प्राइसेस कैन गो हायर. सो दिस इज वन स्टॉक फॉर गोइंग लॉन्ग. एंड फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, सेल ऑन वीकनेस. आई थिंक ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. मार्केट लगे वीकनेस आ रही है, फॉर एग्जांपल मारुति. सो मारुति कैन बी अ गुड शॉट. फेलियर, एक ब्रेकआउट फेलियर दिया है मारुति ने, और एनगल्फिंग बेयर जैसा पैटर्न आज मार्केट क्रिएट किया. सो दिस आर आवर आइडियल शॉर्ट टर्म पैटर्न्स विच कैन बी ट्रेडेड, और आप शॉर्ट कर सकते हो आज का हाई रख के, एंड फॉर अ 1:2 risk reward ratio. In the meantime, anything that you want to write to us, you have queries, please do write to us on our social media. Refer our stock note app. We keep on giving out our researches in that app. Thank you.